Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 6, calculations in logo. So बच्चों अब हम क्या करेंगे, लोगो में calculations करेंगे. So learning in this chapter, print PR command, moving turtle using mathematical operators and performing calculations. Okay, so I hope you all are excited to learn these new things, okay, about logo. So children, we can do a lot of other things in logo such as print text and do simple calculation. So first of all, we are going to understand print, that means PR command. Okay, so this logo command is used for displaying text in the commander window. It is also used when we want to do calculations. Once we type the primitive in the input box and press the enter key, the output is displayed इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स. सो बच्चों प्रिंट कमांड क्या करता है कि जो भी आपका आउटपुट है वो प्रिंट कमांडर विंडो में प्रिंट कर देता है, ठीक है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में ही. नाउ प्रिंटिंग अ नंबर, टू डिस्प्ले अ नंबर टाइप PR नंबर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द सिंटेक्स. ठीक है, PR आपको पहले टाइप करना है एंड देन यू हैव टू टाइप द नंबर वेयर इन द इनपुट बॉक्स. और इनपुट बॉक्स में आपको टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है और यू कैन click on the execute button. Okay, and you will see this is the output. Okay, this 500 is the output. So now Quizmania, what is primitive? Primitive आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है. Now printing a letter or a word. So we use a quotation mark before a letter or a word to print it. So बच्चों अगर आपको लेटर या वर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, in that case you have to use a quotation mark. Okay, to display a letter type PR. Okay, print and letter in double quotes or a single quote in the input box and press the enter key. Okay, to display a word type PR. Okay, and double quotes word in the input box and press the enter key. This is for letter and this is for word. So here what you have to do, first of all type PR and you can see the double quote and a letter and you can see the outcome R. Again, in case of you, if you want to print word, so what will you do, PR and then you have to type the word, but before that you have to type double quote and then you can see the output reading. So यहाँ पे बच्चे दो केसेस हैं, अगर आपको लेटर प्रिंट करना है या वर्ड प्रिंट करना है. So in that case, if you want to print letter, so you have to type the letter after double quote, and if you want to print a word, so you have to type the word after double quote, but do not forget to mention the PR command. Okay, so I hope is it clear to all of you. Now let's moving forward and let's see the printing a sentence. So we use a square bracket. Remember this thing, we use a square bracket before a sentence to print it. Okay, the case was different in case of letter and word, but here we are printing a sentence, so we are using square bracket. To display a sentence, type PR and then square bracket, opening square bracket and sentence in the input box and press the enter key. Here you can see opening square bracket, then reading the book, this is your sentence and you have pressed enter key and now you can see the output reading the book. ओके, नाउ लेट्स सी परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस. अब आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो, सपोज आपने प्रिंट करना सीख लिया कि नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, लेटर कैसे प्रिंट करते हैं, वर्ड कैसे प्रिंट करते हैं, सेंटेंस कैसे प्रिंट करते हैं, एंड नाउ यू वांट टू प्रिंट, नाउ you want to perform calculations. Okay, so we can perform simple mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication, division using print command. Okay, so let's do that. To perform calculation we use the following operators. ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑपरेटर समझिए, ऑपरेटर आपका वो सिंबल है जिसकी वजह से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and divide. Here you can see the purpose. Okay, now addition in logo, if you want to do addition in logo, PR for print number 1 plus number 2. So PR sum. Okay, या फिर आपके पास दो तरीके हैं. ठीक है, पहला कमांड ये रहा and second command is here, PR sum number 1 and number 2. In that case you do not need to mention the operator. आप क्या कर रहे हो, सम लिख रहे हो, तो उस केस में आपको ऑपरेटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप दोनों तरीकों को यूज कीजिए, दोनों से आपको सेम ही आउटपुट मिलेंगे. सो हियर यू कैन सी PR 4 plus 3 you are getting 7, and again if you are typing PR sum 4 or 3, again you are getting the same output 7. So for adding more than two numbers use PR sum number 1, number 2 and number 3 like this. Okay, so now let's move forward and let's say subtracting in logo. So PR number 1
minus number 2, और you can type PR difference number 1 और number 2. So देखिए PR 4 minus 3 किया तो आपको 1 मिला, and PR difference टाइप करके 4 और 3 आपने number 1 2 mention किया, again you are getting 1. Tidbit print command is used to print a message or doing calculations, right? ये तो हमें पता ही है. चले multiplication इन लोगों देखते हैं. So print PR, okay, and number 1 multiply by number 2, और PR product for multiplication number 1 और number 2. So देखिए PR 4 multiply by 3, आपने यहाँ पे ऑपरेटर का साइन दिया, you are getting 12. Again PR product for multiplication 4 और 3, you are getting 12. Did you know to print the text, type PR I love computer in command input box and press enter key और execute command. Okay, तो यहाँ क्या बोला है, आपको बोला गया है आप PR टाइप करके इस सेंटेंस को लिखिए, आई लव कंप्यूटर इन अ कमांड इनपुट बॉक्स, और क्या कीजिए, एंटर की को प्रेस कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम. ओके, सो यू हैव टू डू दिस. नाउ लेट्स सी डिवीजन इन लोगो. सो PR नंबर 1 डिवाइड बाय, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड स्लैश एंड नंबर 2, and then you have to execute it, or you can write it as PR quotient number 1 or number 2. Okay, so if you will see carefully, so आपका PR 4 divided by 2, you are getting 2, and again PR quotient 4 divided 4 or 2. Okay, you didn't mention the operator, you have mentioned the command, I mean keyword quotient, और जब आप इसे execute करोगे still you are getting 2. Now triangle shape seen on the screen center is called, so आप उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो turtle. Now Quizmania, name the following operators. So I hope आप इसका नाम खुद लिख पाएंगे. Now let's see moving turtle using mathematical operators. So we can also use a mathematical operator like plus, minus, multiplication or division to calculate the steps which the turtle has to move in the graphic screen. Okay. So अब हम क्या करेंगे, mathematical operators का use करके turtle को move करवाएंगे. So here you can see first I'm typing here forward 80 plus 60. और फॉरवर्ड फ्रॉम 80 और 60. तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे आप देखिए वो इतना स्टेप टर्टल आगे बढ़ गया. ठीक है, नाउ बी के 80 माइनस 60, इसका क्या मतलब है कि 20 स्टेप्स बैक. ओके, क्योंकि आउटपुट क्या होगा 20, सो बी के डिफरेंस 80 60, स्टिल यू आर गेटिंग 20 स्टेप्स, वो क्या हो गया, बैक आ गया. ओके, नाउ वोकैबुलरी. सो ऑपरेटर इज अ सिंबल और फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स. As I told you, ऑपरेटर एक सिंबल होता है और आप कह सकते हो फंक्शन होता है जो ये बताता है कि उसे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैथ्स में. ओके, इन अ नटशेल द प्रिंट कमांड लोगो इज यूज्ड टू शो टेक्स्ट और नंबर इन द कमांडर विंडो. ओके, प्रिंट कमांड क्या करता है, लोगो में कमांडर विंडो में क्या करता है, आपके आउटपुट को प्रेजेंट करता है. मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स operations respectively. Okay, mathematical operators can also be used with FT or BK to move the logo turtle. अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पे क्या ही करा है, हमने यहाँ पे यूज करे हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, क्यों, टर्टल को फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विद FD एंड BK. नाउ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन कमांड्स आर यूज्ड टू फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन respectively. So that's all for this chapter, students. I hope you have understood all the concepts of logo. ओके, आई थिंक लोगो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोगो को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, लोगो में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज योर चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज. ओके, सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. नाउ revise all the chapters of your book, try out the exercise, okay, and learn the concept and understand them. So all the very best for your exam, students. Keep learning and keep exploring. Bye bye, students.